Logical evening, everyone. I can see through your chats. So, welcome to G Quiz episode 2. When I say G Quiz episode 2, let me tell you one thing at the onset. ये जो करंट अफेयर्स की क्विज हम विधिज्ञ में कर रहे हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि व्हेन यू सी दिस क्लैट एग्जाम 25% questions, almost 28 on 120. I mean, these are the number of questions which are featuring out from current affairs section. और करंट अफेयर्स का सेक्शन के 25% क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं. सॉल्व भी नहीं होता अल्टीमेटली, यू इधर नो देम और यू डोंट. तो मुझे लगता है कि ये एक वो एरिया है जहां पर हमें अच्छे से मेहनत कर लेनी चाहिए फॉर दिस मेंटी क्विज. I'll just ensure that you have the code available. It is 27537844. To everyone, in this Menti quiz today, as we have always been clear about the fact कि जीके को हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है. सुजल, शिवांश, तपस्या, एवरीबॉडी, लॉजिकल इवनिंग. छोटी सी बात मैं आपसे बोल रहा था कि वी नीड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट आवर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. वी नीड टू डू इट ऑन डेली बेसिस और हर वीकेंड पे हम इसको असेस कर सकते हैं थ्रू दीज क्विजेस एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी डू इन दी क्लास. इंपॉर्टेंट आपके लिए इस समय ये है कि फर्स्ट टू सेवेंथ की ऑलरेडी एक जी क्विज हो चुकी है. This is for week 2 of January. अगर अभी से you are getting serious, because I've seen students those who are in school, they tend to procrastinate और जुलाई अगस्त सितंबर आने के बाद वो जनवरी शुरू करते हैं. By that time it's late. So if you are holding bull by the horn now, I think it will give you a bit cushion in the later time. तो आप सब लोगों ने अगर ज्वाइन कर लिया, just 11 have joined. If others can also join, we can quickly start the quiz. Logical evening, everyone. चलिए. All right. Before, I think we have joined. All right. When I say the number, it is Menti code is 27537844. वंडरफुल, गुड टू गो. करें शुरू. तो आज इस क्विज को शुरू करने से पहले वन थिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस पूरे वीक में वो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज थी जिसका 360 डिग्री एनालिसिस आपको कर लेना चाहिए. आप लोग अगर नोट्स लिखने की आदत बनाएंगे ना तो यू विल हैव अ रेडी रेकनर. इंटरेस्टिंगली, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू और द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग, समीप सर के वीकली राउंड अप में दे आर क्रिस्टल क्लियर टू यू. ये टॉप स्टोरीज तो होंगी, साथ में एवरीथिंग दैट वाज रेलेवेंट टू बी कवर्ड इन द वीक दैट यू वुड हैव ऑलरेडी डन. न्यूज़पेपर पढ़ो, क्विज दो, समीप सर का राउंड अप सेशन अटेंड करो, मंथली राउंड अप्स करो. आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर जीके. हमें अभी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये देखना है कि डिड वी गो थ्रू दीज टॉपिक्स वेल. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज आई से, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन बिल्किस बानो केस. इंटरेस्टिंग है. इन सारे टॉपिक्स पे देयर आर सम क्वेश्चंस आल्सो लाइंड अप, सो आई एम नॉट गोइंग दैट डीप. बिल्किस बानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जहां दो स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन पे बात हुई है. आई नॉट गो डीप बिकॉज वी हैव सम क्वेश्चंस देयर एज वेल. तो दिस वाज द टॉप स्टोरी ऑफ दिस वीक. पढ़ी जितने लोगों ने, जब पढ़ी, जस्ट हैव अ थम्स अप. हम लोग अभी 7 ऐसी टॉप स्टोरीज लिख रहे हैं जो आपको पढ़ी होनी चाहिए थी. अगर पढ़ी है तो लिख दो आई. ऑल दोज हु हैव डन, जस्ट राइट आई. The second top story of the week is India Maldives relation, and we also have this photograph, the Lakshadweep photograph from where the controversy started. It's very interesting क्योंकि CLAT को अगर आपको assess करना है in this new avatar of CLAT which is from 2020, we get to see one thing. 2020 से जो नया पैटर्न आया क्लैट का, इसमें कभी भी आपको, ओ ग्रेट, आई एम एबल टू रीड. शिवांश, कुणाल, दीक्षा, वंडरफुल. पढ़ा होना चाहिए था, तो बेसिक था, पढ़ा होना ही चाहिए था. आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये थी जो आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये सारे टॉपिक आप देख चुके हैं. एक आपको देख लेने चाहिए थे, इनका 360 करके बैठना चाहिए था और राउंड अप्स के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए था. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी व्हिच इज हैपनिंग, क्लैट का एक फेवरेट एरिया रहा है एंड दैट फेवरेट एरिया हैज बीन दैट इंटरनेशनल रिलेशंस. तो ये टॉप स्टोरी नंबर 2 ऑफ वीक 2 ऑफ क्लैट 2025 है ना. 1 दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाएगा, तो 1 जनवरी से 7 जनवरी वाला सेशन इज टेकन.
This is week 2, that is from 8th of January to 14th of January, right? So this was the second big story of week 2 of January. The third big story of week 2 of January is this one. Environmental concern that 2023 happens to be the warmest year. Now, you see, हमारी news number 1 legal background से, which is concerning the country. News number 2, the most important news number 2 was coming from an area which makes great good sense because it's international relations. News number 3 is typically talking about environment. Again, क्लैट फेवरेट एरिया है, पता होना चाहिए था. कितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया? आई एम आस्किंग अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज नंबर 3. ऑल दोज हु हैव रेड जस्ट राइट आई. क्योंकि आप लोग अगर आई लिख रहे हो ना तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगली बार भी जब मैं बैठूं क्विज में तो पढ़ के आया करूं. जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो बेयर मिनिमम पढ़ ही लेना चाहिए था, उसका मैंने 360 डिग्री करके रखा है. सो आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग हैप्पी. ग्रेट ग्रेट. पलक पलक, कृष्णा, प्राची, सुजल, शिवांश, कुणाल, आस्था, wonderful. The fourth biggest news is Aditya L1 mission is parked into L1 orbit successfully. Now, when I talk about this mission, space and science, हम अभी वो important themes देख रहे हैं जो क्लैट की फेवरेट होनी चाहिए. क्या क्लैट एग्जाम में there's a wide array of question tested. 2023 was nightmare and 2024 was though a cakewalk, but we believe that the actual papers lies between these two ends, है ना? तो ये was the fourth important news. Fifth, महाराष्ट्र स्पीकर गिव्स अ वर्डिक्ट ऑन शिवसेना स्प्लिट. ये एक जो कहानी चल रही है ना कि शिवसेना इनकी होगी या इनकी होगी, उस पे इनका जो एक डिसीजन था, that was a news that has some legal aspects, some constitutional aspects, and I think that was worth reading. Again, हमारी न्यूज नंबर जो 5 है, that comes from law. Sixth, again coming from international arena, South Africa's genocide case against Israel at International Court of Justice. अब ये साल भर न्यूज रहने वाली है, तो आपको स्टैटिक जीके में पता होना चाहिए what is ICJ, what is the case of genocide, what are South Africa's allegations, how is Israel defending, so on so forth, है ना? And the last most important news for week 2 of January is that European Union launches world's first carbon border tax to bolster green transition. ये भी environment पे. So by now we have seen the 7 top stories. फटाफट बताओ इस वीक की एक मेमोरी रिफ्रेश हुई नहीं हुई? हाँ या ना? वंडरफुल. सही है. क्विज शुरू करें? कैन वी? चलो. So here goes question number 1. Are you ready? All right, we start quizzing. GKuiz episode 2. We start and let's see who wins this. The question is on your screen. The Union Territory of Lakshadweep comes under the jurisdiction of which High Court? Lakshadweep news में थी, कौन सी हाई कोर्ट के jurisdiction में? महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट या कर्नाटक हाई कोर्ट? Yes. All right, many of you got it wrong. Interesting question tha. Lakshadweep was so much in news, it comes under the jurisdiction of Kerala High Court. Go to the next question. Jaldi se enter karo, we'll go faster. That is question 2. Here on your screen. Which region prepares to enter the formidable 40-day harshest winter period known as Chilakala, which commenced recently? सबसे ठंडा एक वो जो पीरियड होता है जिसे चिला कला बोलते हैं. That was the news. My God, people marking it. Kullu Valley answers Kashmir. It was very much in the news. ये गलत नहीं होना चाहिए था. Going to the next question. I'll be a bit faster now for quizzing. The next question we have on the screen. Nikhil Gupta, an Indian national, was arrested by which country based on US inputs alleging his involvement in plot to kill the Gurpatwant Singh Pannu? जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का केस था उसमें यूएस की इंटेलिजेंस ने किस इंडियन को एलिज किया है और किस देश ने पकड़ा है? उनका अरेस्ट चेक रिपब्लिक ने किया था. पीपल
Marking Canada here was a trap, and you don't read is what it shows. Going next. Tribal rights activists condemned and protested against large-scale tree felling for which coal mining in हसदेव अरण्य रीजन. Which state? किस स्टेट का है ये हसदेव अरण्य रीजन? न्यूज में था. It was in Chhattisgarh. People marking Jharkhand, Odisha, Bihar. See, हमेशा जब भी questions को form किया जाएगा ना, तो the options are designed such way that you fall trap to them. So, going to the next one. Here we go. The next question on your screen. सेकेंड टर्म नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, उसमें भारत का जीडीपी कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा है? सीएजीआर कितने परसेंट से बढ़ा है? Many of you would be falling trap for B, which is a wrong answer. Answer is 4.1%. People marking B would have read it in toto and they would have missed with figures. So again, that was important. Going next question. Here we go. फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के? इसी में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना, इसी में नालसा और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है. So you need to know it's a directive principle of state policy. So many things I've told. Answer is 39A. We must have known this one. Going next. Indian Olympic Association formed dash member ad hoc committee to run day-to-day affairs of Wrestling Federation of India. बहुत न्यूज में था, पता होना चाहिए. ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा. People marking A are absolutely right. It was 3-member commission, 3-member body committee. Going next, question 8 of 65. 65 questions हैं. You have to hold your breath. 65 क्वेश्चन है, पूरा वीक कंप्लीट हो जाएगा. शेख हसीना का कौन सा कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एज प्राइम मिनिस्टर? है ना, कितनी बार बन चुकी हैं वो? बांग्लादेश इज नाउ सिनोनिमस टू शेख हसीना. The answer is fourth. People have missed out this one. Question 9th of 65 is here. I'm not elaborating because ये सारे टॉपिक्स समीप सर ऑलरेडी डिस्कस करेंगे अपने वीकली राउंडअप में. So that would consume a lot of time. ये आपको इसमें ना ओपीएचआई, आई एम वेरी श्योर दैट यूएनडीपी तो आपको पता ही है, लेकिन ये ओपीएचआई ऐसी बॉडीज का नाम भी पूछ लेता है. क्लैट तो आपको मालूम होना चाहिए, इट्स ऑक्सफोर्ड पार्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव. सो यू मस्ट नो दिस वन, राइट? दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन. कमिंग टू 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन का एक लीडर बोर्ड है. लीडर बोर्ड पे हम चेक करेंगे हम कहां खड़े हैं. एंड हियर वी गो. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी. इस पे आपको स्टैटिक जीके भी मालूम होनी चाहिए. एंड द क्वेश्चन इज, सिमलीपल की चटनी एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसे जीआई टैग मिला है, किस स्टेट से है? एंड आई एम वेरी हैप्पी द स्टूडेंट्स यू गॉट इट. जीआई के बारे में पढ़ते रहते हैं फटाफट. जितने भी स्टूडेंट्स आर इन दी क्लास, टेल मी GI as a topic, are you clear? Just to brief you through a bit. Geographical Indications Act of 1999. Certain products coming from certain areas have special characteristics because that come from that particular geographical region, and there's a reason why we protect them by issuance of GI tag. It has two benefits. It not only protects the local producers but also takes care of consumer interest. इतने सारे लोगों को क्लियर है? वंडरफुल. दिस इज द स्पिरिट.
ग्रेट। हमने टॉपिक पढ़ा भी है, लॉ में पढ़ा है आईपीआर पढ़ते टाइम। सो हियर्स द लीडर बोर्ड। साहिल, oh my god, somebody has come with my name. Oh, wonderful, wonderful. So wonderful is the feeling. If somebody has come with my name, trust me, the book that you're going to get would be self gifted to me. मैं रख लूंगा उसे, है ना? All the best. चलो, and those जिसने मेरा नाम लिखा है ना, please please be number one there. हाँ, number two I don't like. I like number one. चलो, साहिल, वैष्णवी, आरोही, पलक, शिवांश, प्रियंका, ओम, मनन. Great. So here we go. Question 11th. And मजा आ रहा है क्विजिंग में। पूरे हफ्ते भर पढ़ोगे ना तो आज के दिन मजा आएगा, और ये तो पूरे साल भर होने वाला है, तो यू हैव टू बी ऑन इट। बिल्किस बानो केस पे है ये क्वेश्चन। उसमें बिल्किस बानो ने बोला के केस में बोला कि एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के जुरिस्डिक्शन को अजर्ब कर लिया, वो जो उसका डोमेन नहीं था वहां जाके ट्रांसग्रेस कर लिया जुरिस्डिक्शन। So I think the question is very simple. It's Maharashtra. Gujarat was not having competence to issue that remission order, and therefore the Supreme Court was of the opinion it was the jurisdiction of Maharashtra government and not the jurisdiction of Gujarat government. Easy nut. Going next. अब ये क्वेश्चन द केक वॉक, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? राइट टू प्राइवेसी वाज देयर इन द न्यूज़ फॉर सम रीजन, वी नीड टू नो अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आरटीपी, राइट टू प्राइवेसी प्रोवाइडेड। आई थिंक एवरीवन विल बी राइट इन दिस। आंसर सी विदाउट आउट ऑफ डाउट। पीपल मार्किंग ए बी और डी, भैया बेसिक्स हैं तो लॉ के बेसिक्स, वो बात जो सबको पता होनी चाहिए, यहाँ गलती का कोई चांस नहीं है। राइट, चलो गोइंग नेक्स्ट। क्वेश्चन 13 हियर। हर 10 क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड है। द गोल्डन ग्लोब्स 2024 फॉर द बेस्ट एक्टर इन ड्रामा मोशन पिक्चर इज अवॉर्डेड टू विच एक्टर? दिस इज इंटरेस्टिंग। 2024 में अवार्ड दिए हुए हैं। चिलियन मर्फी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द मूवी वॉज ओपेनहाइमर, है ना? मूवी कौन सी थी ये तो पता होना चाहिए। इट्स चिलियन मर्फी। ऑलराइट, was it Oppenheimer? For which movie did he get this? My God, थोड़ा लेवल ऊपर, है ना? Franz Beckenbauer, the former football player who recently died, hailed from which country? किस देश से आते हैं वो? उनका नाम देख के you can make out. अदिति से ओपेनहाइमर ही है, दीक्षा भी बोल रही है। चलो ठीक है, फिर आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। इट्स जर्मनी। नाम से नहीं था, फ्रैन बैकनबॉर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ऑफ 65 हियर ऑन योर स्क्रीन। ये जो क्विज है ना, ये क्लैट एग्जाम की तरह मैराथन है, लंबा है। प्रेरणा वाला जो प्रोजेक्ट है कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है ना, कॉमन सेंस का आंसर आना चाहिए। इवन यू नो एवरीवन शुड मार्केट राइट। प्रेरणा लर्निंग प्रोग्राम के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। Ministry of Education was easiest answer. People marking A, B or C. Wrong choice. Going to question 16 or 65 on your screen. हाँ, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, आपको लीसा भी पता होना चाहिए, आपको नासा भी पता होना चाहिए, आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए। LISA, NASA और ESA का आपको पता होना चाहिए एब्रीविएशन, बेसिक बात है। लीसा का तो पक्का ही पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। लाग्रांज पॉइंट कौन सा होगा उसका? दैट वाज पॉइंट 1, वो भी अर्थ से बहुत दूर होता है। क्वेश्चन 17 ऑन योर स्क्रीन।
Which European Union country has allowed tariff-free entry for all industrial goods from all countries? Opening up economies like hell. Which country? ऑफ कोर्स आपको ये कॉमन सेंस से एलिमिनेशन से संयुक्त सर बताते हैं क्लास में इट कुड बी डन यू कुड मेक आउट सच इनिशिएटिव्स कम फ्रॉम स्विट्जरलैंड लाइक कंट्री दे आर हैविंग मेनी मोर थिंग्स ईमानदारी से बताओ अगर हफ्ते भर हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम क्विज देते हैं तो अच्छा लगता है एट टाइम्स द क्वेश्चंस दे हेल्प यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर और यहाँ से सेरिब्रल जूसेस अगर हर वीकेंड सिक्रीट हो रहे हैं ना एंड यू आर हैविंग दैट सेंस ऑफ लर्निंग कि मैंने पढ़ा है मुझसे बनता है आई एम श्योर यूल डू बेटर इन क्लैट गोइंग नेक्स्ट 18th क्वेश्चन जल्दी करेंगे अब कृष्णा गोदावरी बेसिन में से कौन सी ऑयल कंपनी ने अपना ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है KG3 बेसिन ब्लॉक चले आगे इट्स ONGC ये कहां लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में इंडियन ओशन में गल्फ ऑफ मन्नार में या अरेबियन सी में विच प्लेस इज इट लोकेटेड इट्स बे ऑफ बंगाल सिंपल क्वेश्चंस जितनी भी न्यूज थी उन पे क्वेश्चंस बनने चाहिए According to the official food grains bulletins, cereal production has crossed dash tons for the first time in 2022-23. Stats वाला क्वेश्चन है and it's option C. People would have tested their lucks answering this question. Again, we get to leaderboard. My good God. For sure, I'm getting the book until somebody outperforms. Huh? Great one. Great fun going. Next. Indian classical music musician Ustad Rashid Khan recently he died. He belonged to which music gharana? We need to know music gharana कौन से music घराना से ये belong करते थे? Answer is A. Agra. Obituary was in news. A very celebrated musician singer of this country. Which body established National Cancer Grid with support of Tata Memorial Center? Department of Health and Family Welfare, Department of Pharmaceutical, Department of Atomic Energy, Department of Space. कैंसर को आप है ना समझ सकते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से दे सम कनेक्शन वो जो रेडियोलॉजी है ना रिसर्च वो लोग जो ट्रीट करते हैं ना उसमें एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी और they use all such technology in treatment of cancer. So that maiden edition of Inland Waterways Development Council held in which city? Mumbai, Panaji, Kochi, Kolkata. ये तो should have read. सी के पास वाला जगह होना चाहिए ना कोलकाता यू शुड हैव मेड आउट आई एम नॉट एलेबोरेटिंग हाँ इसका अच्छा वीकली राउंड अप होगा सो दिस इज नो पॉइंट वी गो डीप इनटू दैट कल इसका वीकली राउंड अप है पूरे हफ्ते अखबार पढ़ो क्विज लिखो वीकली राउंड अप पढ़ो जीके सेट है इंडिया के हाईएस्ट मार रही है हमें Gabriel Attal was so much in news. He's the first person who has become the prime minister and he's an open gay. So again, when we talk about gender neutrality or
third gender or transgenders, LGBTQ community. So it's a news that makes great sense in that context. The taboo attached to being a gay or lesbian has been taken away with this. The world is changing, and so are our ethos. Which article of the Constitution empowers all religious and linguistic minorities to establish and administer educational institution? Minority की बात हो रही है. सिंपल है इसका आंसर. देखो आर्टिकल 25 26 is only talking about religious freedom. They're not talking about minorities. Minority either may be a religious minority or linguistic minority. So had anyone marked 29 or 30, it shows that there was some, missing out on a good option. Marking A or B, nah, गलती हो गई. Let's go to the next question. AMU origin पे क्वेश्चन है. एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने एस्टैब्लिश किया था? सैयद अहमद खान इज द आंसर. Go to the next question. लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप इतना सारा न्यूज में रहा है ना, पूरी मतलब ग्लोब हिला हुआ है, मतलब इंडिया, मालदीव्स, चाइना, ऑल इनटू प्ले. इट हैज बिकम एपिसेंटर ऑफ इंटरनेशनल जियोपॉलिटी. उसमें कैपिटल ऑफ, माय गॉड, सी हियर is a correction required. The answer is Kavarati. है ना? ये पता ही होना चाहिए. It's wrongly done here. It's Kavarati. B Bombay is the answer. सिलवासा तो हो गया, अपना दमन एंड दीव का. जावा आइलैंड है लक्षद्वीप में पर कैपिटल नहीं है. नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता. द आंसर इज बी कवारती, which maximum of you marked. Good going. आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट कौन से देश ने लॉन्च किए? देखो हम लोग बार बार क्वेश्चन ला रहे हैं साइंस से, इंटरनेशनल रिलेशन से, नेशनल इंपॉर्टेंट अफेयर्स से, आर्ट एंड कल्चर से. यू नीड टू नो दीज एरियाज वेल. इट्स चाइना. क्वेश्चन नंबर 29 of 65. The Golden Globe Award for Best Animated Feature Film was given to. The answer is B Bombay. कैटेगरी समझिएगा, इट इज बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म. एनिमेटेड फीचर फिल्म ओपेनहाइमर को मिला था पर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी में नहीं मिला था. द आंसर इज द बॉय एंड द हेरॉन. पढ़ना चाहिए. द क्वेश्चन वाज डिजाइन्ड टू ट्रिक यू. साइंस से फिर एक क्वेश्चन आ गया. Here we go. Answer is Australia. I was waiting for the leaderboard. This wonderful person at the top is doing good. Great going guns. I'm sure getting a book. The one who's playing with my name, make sure that get all the questions right. I'll definitely give you 2 books now, but you maintain this till the end. You get 2 books, one signed by me as well. All right, which is the world's first country union that imposes carbon border tariff on steel, iron, aluminum, among other such items? किसने impose किया है? EU, SAARC, US, UK. It was in news. The answer is simple. It's EU. Majority of you get it right.
We go on to question number 32 of 65 here on your screen. First foreign university to open campus in India. The world is coming to India. And simple question, its answer is Deccan University, the Bombay, and we go ahead. Which state's cabinet announced Sri Ram Lala Darshan scheme under which 20,000 people from state will be taken to Ayodhya every year? हर साल अयोध्या के दर्शन के लिए ले जाएंगे. कौन से स्टेट की बात है ये? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़. आंसर इज छत्तीसगढ़. स्ट्रेंज. मध्य प्रदेश वालों को लगा बस यहीं की फिर कोई यात्रा बनेगी. Question 34 of 65 on screen. Copernicus Climate Change Service C3S service has confirmed that 2023 was the warmest year ever recorded. C3S is Dash Earth's observation program. यूएस का है, यूके का है, ईयू का है, रशिया का है. आंसर है ये ईयू का है, यूरोपियन यूनियन का है. मेजॉरिटी ऑफ यू गोइंग विद यूएस. In which country caucus system is used for choosing presidential nominees by political parties? Ireland, Sweden, US या Canada? The answer is simply C, US. National Logistic Policy has set a target to be among the top dash countries in Logistics Performance Index 5, 10, 15, 25. कौन सा नंबर टॉप 10 बनना है, 5 बनना है, टॉप 15 या टॉप 25? The answer is top 25. ऐसे थोड़ा ना सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता है ना, ऐसे तो टॉप 1 टॉप 2 टेक्स टाइम. Well, going fast. Leeds Report 2023 was released by Ministry of Commerce, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Statistics, Ministry of Finance. Leeds Report. CLAT के लास्ट ईयर के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड हैं ये सारे क्वेश्चंस. Team works very hard on ensuring that this question comes to you. Answer is A, Agra. Question number 38 here on your screen. Which Indian company has handed over Drishti 10 Starliner unmanned aerial vehicle to Indian Navy? The name of company. Defense sector में Indian companies are doing great in last few years. Which IIT's HydroSense lab has created India's first high-resolution landslide susceptibility map? IIT Delhi. इसके बाद फिर लीडर बोर्ड आने वाला है. इस वाले 10 क्वेश्चन में साइंस ज्यादा था. UAE has announced its participation in developing a module on which space agency's lunar gateway station. On which lunar space gateways? On which space agency's lunar gateway station? कौन सी space agency की question हो रहा है? NASA, ESA, ISRO. Answer simple, NASA. Great going. Wonderful, wonderful. To everyone out there, just tell me
By now, you have seen 40 questions. We are done with 40 questions by now. The leaderboard is right at the back of me. Did you like these questions? Were they good? If the questions were good, just let us know. You enjoyed these questions. हमारा मानना ये है कि just getting any Tom, Dick and Harry questions very easy task. Our team works on this. We come up with that research, and the idea is to stimulate your mind. The idea is to ensure that the cerebral juices indeed are secreted. The idea is that we don't wait for the month of July to cope up with January, which is a usual case with everybody. हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था 1 जनवरी से जीके शुरू करेंगे. इट हैज बीन वीक 2 फ्रॉम 8th to 14th. लग के तो कर रहा है, मजा आ रहा है. चलो देन कीप एंजॉइंग दिस. बढ़िया है. और अगर इफ यू लाइक दैट एंड इवन प्रेस द लाइक बटन. गोइंग अहेड. चलें. हमारा अब लगभग लगभग 1/3 क्वेश्चंस होगा. लास्ट के 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं. लास्ट के 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है. उसमें पैसेज को हमने हटा दिया बिकॉज मेंटी पे इट वाज नॉट गेटिंग गुड. वील जस्ट डिस्कस क्वेश्चंस. थीम है. ICJ begins hearing genocide case against Israel. Which country has accused Israel for carrying genocide in Gaza and took the matter to ICJ? इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पहले पढ़ा था, है ना? ये वाला गलत नहीं हो सकता. अब anybody who mark this wrong is committing an offense. It's sin. पाप है ये, अपराध है ये. हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में भी लिया था, पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है. यू कुड नॉट हैव अफोर्ड टू मिस दिस वन. Israel is taken to ICJ by South Africa. तो जिनने ईरान, सऊदी, इजिप्ट मार्क किया है, दे आर द पीपल दोज हु डिड नॉट इवन सी दिस सेशन फ्रॉम बिगिनिंग. इट्स सैड. चलते हैं आगे. ये वाला गलत होना नहीं बनता था. आई मीन इट वाज सो इजी. गोइंग अहेड. आईसीजे में कितने जज होते हैं? आईसीजे इतना सारा न्यूज में रोज आ रहा है, साल भर रहने वाली है ये न्यूज. सो बी वेरी क्लियर अबाउट जीनोसाइड एंड ऑल दीज टर्म्स ऑन सो फोर्थ. और हर दिन आपको जो 10 क्वेश्चंस ऑन जीके एंड ऑन वोकैबुलरी दिए जा रहे हैं, उनको भी सॉल्व करें. दे आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल सेल्फ. क्लिक ऑन देम, चेक आउट. 10 minutes dose would keep you good and updated. डेली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से टीम वर्क्स एंड गेट यू दैट. तो वो डेली डेली करोगे ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग. आप हर दिन 10-10 करते जा रहे हो ना, 10 जीके 10 वोकैब, तो 2-4 महीने में you'll be ahead of many. तो वो शुरू कर दो. राइट. आईसीजे के कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं? एवरीबडी नोज 15 ही होते हैं. तो आगे चलते हैं. क्वेश्चन 43 ऑफ 65. नेशनल यूथ डे अभी 12 जनवरी को हुआ. जिस व्यक्ति के लिए हुआ उस व्यक्ति को बोला जाता है नरेंद्र. अब आपके पास एक क्लू है, अब भी तुम कर लो उसको. एंड देयर इज अ जर्नी ऑफ गुरु एंड शिष्य. द शिष्य वॉज नरेंद्र, द गुरु वॉज रामकृष्ण परमहंस, and this guru shishya relation transformed Narendra to someone who is Swami Vivekanand. Right? मालूम होना चाहिए पूरी कहानी. Government is set to roll out human papillomavirus vaccination HPV campaign for girls of which age group? Papilloma virus. Nine to 14 years. At times I would have that urge to explain the questions, but again, वीकली राउंडअप में अच्छे से पढ़ना है. तो ऑल दोज आर नोइंग दिस, गुड फॉर यू. आगे देखते हैं.
ये वाला क्वेश्चन हमारा एक बायस है इसलिए देते हैं. Since we hail from Indore, which is the cleanliest city of India, seventh time in the row, making history, so it feels good. Somebody marking, I mean, क्या ही था ये तो पॉसिबल ही नहीं था. क्वेश्चन 46. बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर सैनिटेशन वर्कर्स. कौन सी सिटी बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अडियर करती है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए? इट्स चंडीगढ़. प्रवासी भारतीय दिवस. गोइंग नेक्स्ट. सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. जनवरी 9th इज द आंसर. Recently in news, Quakfu, SEZ, and Special Economic Zone and Deep Sea Port is was in news. It's located in which country? China, Japan, Myanmar, Indonesia. Answer is Myanmar. Indian Company of the Year for outstanding achievement. It's ISRO. In organization, I mean. गंगा सागर मकर संक्रांति का दिन जो कि कल होगा, कहाँ सेलिब्रेट होता है? कल्चर से रिलेटेड बात है. आंसर सिंपल. इट्स इन वेस्ट बंगाल. And 17 of you got it right. Again, the leaderboard keeps ticking, ticking, and ticking. Chalo. Going next. पैसेज लिखा था बहुत बड़ा सा, पर व्हाट वी बिलीव इन क्लैट 2024 वाज एन एक्सेप्शन. इससे पहले अगर आप कभी ना क्लैट 2024 को एकदम देख के बेंचमार्क कर लो और बोलो क्लैट ऐसा ही होता है, मेरा सजेशन है क्लैट 2020 देखो, 21 देखो, 22 देखो, 23 देखो. जीके हैज नेवर बीन ridiculously simple where the answers are given in the passage. It's never the case. So यूजुअली आपको पैसेज पढ़ना होता है, वहां से हिंट्स मिलते हैं, पर पैसेज में आंसर हो ऐसी उम्मीद हर साल मत रखना. हम लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें सीधे सीधे आंसर नहीं मिल रहा था पैसेज से. सो फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम के रीडिंग टाइम बच जाए, वी डिड नॉट राइट पैसेजेस. पर ये पहला पैसेज इज अबाउट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस. एक इंपॉर्टेंट एरिया था तो इस पे एक पैसेज था, अच्छा सा पैसेज था. टेकन इट फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स. पर अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं. ये तीनों अब पैसेज बेस्ड थे ना, अब ये सारे इंडिया मालदीव्स रिलेशंस पे ही होंगे पांचों क्वेश्चंस. Successful operation that Indian military carried out during 1988 in Maldives coup. Maldives coup d'etat attempt. जो मालदीव में coup हुआ था 1988 में, उसमें जो इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन था उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज ऑपरेशन कैक्टस. हिस्ट्री रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. देखा, इस तरीके से 360 करते हैं. ये सारी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए थी. मालदीव्स वाज इन न्यूज. मालदीव्स के साथ साथ लक्षद्वीप वाज इन न्यूज, तो मालूम होना चाहिए. Who is the new president of Maldives who broke the long tradition of visiting India first as Maldives president? This is how I say it becomes the epicenter of international geopolitics. Answer is simple. Mohammad Muzu.
Question 53 of 65 on our screen. I'm going a bit faster. जल्दी हो जाए हमारा. What is the name of the military exercise between India and Maldives? Military exercise between two countries. The answer is Equerin. In 2023, which country has sent most number of tourists to Maldives? Now, come on. इसी पे तो पूरी झगड़ा है, इसी बात की तो पूरी लड़ाई है. हमेशा देखना इंटरनेशनल जियोपॉलिटी में द बिगेस्ट रीजन ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट इज इकोनॉमी, द मनी. इंडिया से ही जाते हैं सबसे ज्यादा लोग मालदीव्स घूमने. तो अगर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब होंगे, इट्स गोइंग टू अफेक्ट देम वेरी बैडली, एंड दैट इज अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म फॉर इट्स इकोनॉमी, so it might hit them hard. In 2022, India was Maldives' dash largest partner. ये पूरी एक कहानी है जिसे आप वीकली राउंड अप में पढ़ेंगे, सो आई एम नॉट गोइंग दैट डीप. अब आपको पता होना चाहिए दूसरे किस पैरामीटर की. एंटी डिफेक्शन लॉ, अगेन दैट न्यूज ऑफ महाराष्ट्र, है ना, द डिसीजन ऑफ स्पीकर हु इज to be disqualified, whether disqualification should be done. Anti-defection, basically, in the constitution is an important topic. पता होना चाहिए. When country में ऐसी कुछ चीजें हो रही है तो you should know. You straight away go to questions. In which year 10th schedule of the constitution was included in the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, 9, 10th, 11th, 12th बाद में ऐड किए. एंटी डिफेक्शन इज प्रोवाइडेड इन 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स 1988. कॉमन सेंस की बात है. 42nd 76 में आया था, 44th अमेंडमेंट 78 में आया था, तो कैलकुलेट कर सकते हैं 78 के बाद वाला ही आंसर होगा. Which committee recommended amendment of anti-defection law to restrict disqualification where elected members voluntarily give up his membership? केलकर कमिटी, दिनेश स्वामी कमिटी, एस के माझी कमिटी, जेवीपी कमिटी. इस दिनेश गोस्वामी कमिटी. 58 of 65 is right here. कौन डिसाइड करता है अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स आउट ऑफ डिफेक्शन? अगर स्टार्टिंग का वो देख रहे होते तो यू वुड हैव गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी. स्पीकर की फोटो थी ना, स्टार्टिंग में हमने बात की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द वीक में. अभी क्वेश्चन 59 का आंसर हो जाएगा अगर पुराना क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा. एवरीवन गेटिंग दिस राइट? ये वो हिंट वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, वेयर यू गेट टू रीड एंड यू गेट टू नो दिस. एंड हियर वी गो फॉर क्वेश्चन 60. इसके बाद लीडर बोर्ड और उसके बाद फाइनल लीडर बोर्ड. Under anti-defection law, nominated member can be disqualified if he joins any party after expiry of 15 days, 2 months, 6 months, 12 months. टाइम कितना है? C Calcutta happens to be the answer. Simple answer. Passage 3. COP 28. अब जल्दी करेंगे फटाफट. वील ट्राई टू गो हेड. एक एक रैप अप जरूरी है,
UNFCCC COP28 was held in which city? Dubai, Riyadh, Abu Dhabi, Sharm el Sheikh. Simple answer, it's Dubai. 62 of 65 question. UNFCCC secretariat is located in which city? The Hague, Geneva, New York या Bonn? Most of the time, people in the world are of the opinion that all the headquarters are in Geneva, Switzerland. Tell me, how many of you believe so? जब कुछ समझ में नहीं आए तो फिर जेनेवा मार्क कर दो, ऐसा नहीं होता. उसको भी मालूम है क्वेश्चन सेट करने वाले को कि यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, एंड स्टूडेंट्स हैव टेंड टू बिलीव दिस फैक्ट कि जब समझ में नहीं आया तो फिर जेनेवा मार्क कर दो. ऑलराइट. Which institution has served as the trustee of the GEF Trust Fund and has provided administrative services? UNDP, IMF, UNFCCC या वर्ल्ड बैंक? अब पैसेज काय के बारे में है ये आपको पता होना चाहिए. अब आपको पैसेज किसके बारे में है उसी के बारे में क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो इट बिकम्स अ केक वॉक. सब लोगों ने सी मार्क कर दिया वाला यही होगा. COP29 will be held in which city in 2024? New Delhi, Ankara, Baku, Samarkand. Answer C, Baku. And we have the last question. The ultimate question for the day here on our screen. Who is the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? अनुराग ठाकुर, अश्विनी कुमार चौबे, भूपेंद्र यादव, अमित शाह. It's Bhupender Yadav. Now here goes the leaderboard. My good God. Wonderful. Chalo. Finally, it feels very happy that somebody playing with my name has won it. So if I could have your name in the YouTube stream, I would appreciate, and you deserve a signed copy by me, an additional one apart from and one of my favorite books. Another one तो जो तुम्हें मिलेगा विधिज्ञ टीम वाला तो मिल ही जाएगा. So let me have the names written very clearly. Who's the one? If I can have your name. ऑल राइट. जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे ना वो आपको पता होने चाहिए. एवरीवन शुड नो दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हर वीक में हमें एक ये अंदाजा होना जाना चाहिए कि दीज आर द टॉपिक्स दैट आई शुड हैव नोन. आई जस्ट ट्राई टू ब्रीफ यू a bit about those topics and then we'll call it a day. इतनी देर में anyone who was there can just let me know if you liked it. Just let me know. फटाफट चैट पे. ये थी हमारी वीक. हमने वीक की 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखी. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस वीक में EU लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स टू बोल्स्टर ग्रीन ट्रांजिशन. ये एनवायरमेंट वाली न्यूज है, हमें पता होनी चाहिए और बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. सेकेंड, साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल एट ICJ साल भर रहने वाला है, अच्छे से पढ़ो. ICJ एज अ बॉडी भी पता होनी चाहिए. महाराष्ट्र स्पीकर गिव्स वर्डिक्ट ऑन शिवसेना स्प्लिट. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है पर हाँ, पावर ऑफ स्पीकर और एंटी डिफेक्शन लॉ इससे पता हो जाना चाहिए. आदित्य L1 मिशन इज पार्क्ड इनटू L1 ऑर्बिट सक्सेसफुली. अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है, पता होनी चाहिए.
WMO confirms 2023 as warmest year on record by a huge margin. This is something related to environment, पता होना चाहिए. And India Maldives relation, it's going to stretch long. It has got some economic and international geopolity angle as well. तो अच्छे से देखना. And finally, Supreme Court की जो verdict थी in Bilkis Bano case, these have been the top news in the last week. I think that is all from our end. एक important बात सभी लोगों को बोलना था. If I could get the name, I'll make sure that the book reaches. Otherwise, I'll have that book with me. Thanks a lot. Importantly, आप सबसे एक important बात बोलनी थी मुझे, जो आप सबको पता होना चाहिए. Please do not procrastinate GK current affairs. Secondly, अभी से लेकर अगर आप दिसंबर 2024 में जब आपका क्लैट 2025 होगा तब की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो टेक माय वर्ड्स दैट यू विल एंजॉय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग नॉलेज. और जीके को लास्ट के लिए मत छोड़िए. पेपर वाले दिन 10 12 15 मिनट में होने वाला सेक्शन जो 25% वेटेज रखता है really has a big impact on your exam. So I think this quiz of 65 question would have definitely added some value to you, and that's all our job at Vidhigya is, to ensure that the best of academics reaches to you. And which is why when we talk about results, they are the byproduct of the work that we put in. So with this, it's good time for me to sign off. Bahul Shastri signing off from Vidhigya GKuiz episode 2 of January, episode 2 covering week 2 of January. That's all at our end. Stay ahead, stay logical and get set win. जम के बढ़ना है और जीतेंगे तो हम ही. All the best everybody. रिया इज आस्किंग हाउ टू मेक नोट्स. नोट्स जो आपको वीकली राउंड अप होता है संयुक्त सर का, उसमें से मिल जाएंगे. सेकेंड एंड थर्ड प्लेस विनर्स इस बार नहीं यार, अगली बार से भी नोटिफाई द रूल. हर वीक होना है क्विज. सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स 1 2 and 3 ऑल आर गोइंग टू गेट. ऑलराइट, चलो स्टे लॉजिकल. बाय.